quantum physicist Erwin Schrödinger said about the Upanishads. Schrödinger was first exposed to Indian philosophy around 1918 through the writings of the German philosopher Arthur Schopenhauer. An ardent student of the Upanishads, Schopenhauer had declared, "In the whole world there is no study so beneficial and as elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." The Upanishads describe the relationship between the Brahman and the Atman. Brahman is the universal self or the ultimate singular reality. The Atman is the individual's inner self, the soul. A central tenet of the Upanishads is Tat Tvam Asi, which means the Brahman and the Atman are identical. There is only one universal self and we are all one with it. मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कोई कण से बना हुआ है. मतलब नथिंग इज मेड अप ऑफ एनी पार्टिकल. पार्टिकल बोल के कोई भी चीज नहीं है. मतलब जो भी आप लोग अपना चारों तरफ जो भी चीज देख रहे हैं तो उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है. कोई भी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं. तो दिखाई क्यों पड़ता है, क्वेश्चन नहीं आएगा. तो दिखाई इसलिए पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. हम लोग का जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस लेकिन अवेयरनेस नहीं है. इट इज कॉन्शियसनेस. मतलब ये हर एक लेवल का जो एनिमल्स है उसमें थोड़ा ज्यादा या ज्यादा, किसी में कम, ऐसे रह सकता है. ह्यूमन में ये सबसे ज्यादा है ऐसा नहीं बोल सकते. ह्यूमन से भी ऊपर कॉन्शियसनेस वाला बहुत सारा ऐसे एंटिटीज है. एंटिटी बोल सकते हैं, बीइंग्स बोल सकते हैं, जिसका कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो हम लोगों से भी काफी ऊपर है, ह्यूमन से भी काफी ऊपर है. तो ये जो कॉन्शियसनेस का डिवीजन है इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए एक बहुत ही मीठा पानी का बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें पूरा मीठा पानी है और आपने उसमें 10 बिलियन आदमी को बोला कि वो मीठा पानी ले लेने के लिए. तो वहां पे आया और जिसको जितना बड़ा कंटेनर मिला उसके हिसाब से वो अपना अपना पानी ले लिया. अब सबको बोल दिया गया कि आप अपने हिसाब से उसमें कुछ मिक्स कर दीजिए. तो अपने हिसाब से अपने घर जाइए, कुछ मिक्स कर दीजिए. केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बस्ट वस्ट नहीं करना चाहिए, बट यू मिक्स समथिंग जो आपका मन में चाहे मिक्स कर दीजिए. तो सबने अपने घर गया. घर जाने के बाद दे मिक्स समथिंग विद दैट वाटर. उस वाटर के साथ सभी ने कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया. तो ये किसी का मिक्सचर हो गया लाल, किसी का नील, किसी का मीठा, किसी का पीला, ऐसे हो गया. लेकिन देखा जाए तो वो सब पानी ही है. तो जैसे सभी के पास लेकिन वही चीज है, पानी है. अब वो जो समुद्र है जिसमें मीठा पानी है वो प्योर वाटर है. तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये परम ब्रह्म है. दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण. और जो हर एक के पास जो है, जिसको सब अलग अलग लग रहा है, कलर अलग है, टेस्ट अलग है, ठीक है. तो ये सब हो गया आत्मन. तो ये सब आत्मन इक्वल टू ब्राह्मण, यही मेन कॉन्सेप्ट है. The Isha Upanishad states the Brahman forms everything that is living or non-living. The wise man knows that all beings are identical with his self, and his self is the self of all beings. Schrödinger was fascinated by this thought. According to Subhash Kak's books, The Wishing Tree 2008, Schrödinger named his dog Atman, and his conference talks would, by one account, often end with the statement Atman is equal to Brahman, that he would call somewhat self-aggrandizingly the second Schrödinger's equation. When his affair with the Irish artist Sheila May ended, she wrote him a letter that alluded to this fascination. I looked into your eyes and found all life there. That spirit which you said was no more you or me, but us, one mind, one being. You can love me all your life, but we are two now, not one. Quantum physics eliminates the gap between the observer and the observed. The Upanishads say that the observer and the observed are the same things. In his 1944 book, What is Life?, Schrödinger
took on a peculiar line of thought. If the world is indeed created by our act of observation, there should be billions of such worlds, one for each of us. How come your world and my world are the same? If something happens in my world, does it happen in your world too? What causes all these worlds to synchronize with each other? He found his answer again in the Upanishads. There is obviously only one alternative, he wrote, namely the unification of minds or consciousness. Their multiplicity is only apparent. In truth, there is only one mind. This is the doctrine of the Upanishads. मतलब जो भी चीज हम लोग को दिखाई पड़ता है वो लेकिन हम लोग का कॉन्शियसनेस की वजह से वो दिखाई पड़ता है। तो इसमें पहले कौन सा चीज आएगा? पहले आएगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसा चीज है जो पहले आएगा, इसीलिए ये दुनिया है। अदरवाइज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स और वर्ल्ड। नथिंग इज रियल, कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है, हम लोग को दिखाई पड़ता है। अब ये भी हो सकता है कि मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, आपको जो दिखाई पड़ रहा है, शायद एक कुत्ता को दूसरा चीज दिखाई पड़ रहा है, या एक बिल्ली को शायद उस जगह में कोई दूसरा चीज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसका जैसा कॉन्शियसनेस लेवल है वो वैसा दिखेगा उस चीज को। मैं दिख रहा हूं कि ये एक फ्लावर है, आप दिख रहे हैं कि इट इज ए रेड फ्लावर है। समझ लीजिए कोई कलर ब्लाइंड है तो उसको वो दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट एक फ्लावर है। कोई प्राणी को वो दूसरा चीज दिख सकता है या सोच सकता है कि ये मेरा खाने का चीज है। दैट मीन्स ये कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको क्या चीज देखूंगा, और वहां पे एक्चुअली क्या है? एक्चुअल कुछ नहीं होता है। देयर इज नो मैटर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। सो दिस इज द फर्स्ट लॉजिक ऑफ वेदांत उपनिषद। हम लोग अपना कॉन्शियसनेस की वजह से ये देखते हैं। कॉन्शियसनेस आया कहां से? तो इसका कोई आंसर वेदांत में भी नहीं है। कॉन्शियसनेस कहां से आया? तो वेदांत के हिसाब से कॉन्शियसनेस इज इटर्नल। ये इटर्नल है, ये है, इट एग्जिस्ट। ये ना तो कभी शुरू हुआ है और ना ही इसका कभी खत्म है। इसका शुरू भी नहीं है, खत्म भी नहीं है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। कॉन्शियसनेस का अब शुरू और खत्म एंडिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। सो क्लियर कट दो पॉइंट। फर्स्ट थिंग, देयर इज नथिंग इज मैटर। कोई भी चीज मैटर नहीं है। अपना कॉन्शियसनेस की वजह से हम लोग उसको देखते हैं, अपना हिसाब से वो देखते हैं, पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बिकॉज आवर सेंसेस आर ब्लॉन्ड। अपना जो इंद्रिय है वो उतना मतलब सूक्ष्म नहीं है, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है कि कॉन्शियसनेस जो है उसका कोई शुरू भी नहीं है, कोई खत्म भी नहीं है, एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस जब मैनिफेस्ट होता है तभी ये हम लोग उसको चीज देखते हैं, अलग अलग चीज देखते हैं। ये चीज Everything we see around us is Maya, a distortion of the Brahman caused due to our ignorance and imperfect senses. The Chandogya Upanishad says, all this is Brahman. Everything comes from Brahman. Everything goes back to Brahman, and everything is sustained by the Brahman. On this, Schrödinger wrote, there is only one thing, and that what seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing produced by a deception, the Indian Maya. The same illusion is reduced in a gallery of mirrors, and in the same way Gauri Shankar and Mount Everest turned out to be the same peak seen from different valleys. It is easy to see why such a concept would have appealed to Schrödinger. Quantum physics insists that reality exists as waves, and wave-particle duality arises due to our observation. Because we cannot perceive the true wave nature of reality, our observation reduces it to the incomplete reality we see. This reduction is what we know as the collapse of the wave function. The emergence of Maya thus neatly maps to the collapse. Schrödinger was not making passing references to the Upanishads. Instead, he had wholly internalized their core message. Myriads of suns surrounded by possibly inhabited planets, multiplicity of galaxies, and each one with its myriads of suns.
According to me, all these things are Maya. The Upanishads describe how reality arises out of consciousness, but consciousness cannot be found inside our bodies as a substance or an organ. In that case, how can a non-material consciousness interact with and control our material bodies? Exactly where does mind interact with matter? This question is known as the mind-body problem and has vexed philosophers for a long time. Since we haven't been able to locate or explain this interaction, we are left with a deceptively simple choice. Either consciousness or reality doesn't exist. थर्ड थिंग इज एवरीथिंग इज वन. सभी चीज वन है, एक. मतलब जैसे मैं पानी का भी एग्जांपल दिया, तो वो जितना भी आप देखिए, सब मैं बोला कि सबको पानी ले जाने के लिए सबका पानी अलग अलग कलर हो गया, लेकिन है तो वो वाटर ही. तो ऐसे अगर देखा जाए तो सभी कॉन्शियसनेस लो हाई ऊंचा नीचा ऐसा नहीं है, सभी को अगर मिलाया जाए तो दैट इज वन. तो ये हो गया थर्ड थिंग. एंड फोर्थ थिंग, तो क्या हम लोग अपना आसपास जो देखते हैं उसके लिए नहीं सोचेंगे? मैं क्या अपने बच्चे के लिए नहीं सोचूंगा? सो दैट इज कॉल्ड माया. अब ये माया जो है, ये बोलना बहुत आसान है कि माया से हट जाओ, माया सब कुछ मोह माया है. देखिए स्पिरिचुअल जाइंट्स भी जो है वो भी मानते हैं कि माया से हटना इज वेरी डिफिकल्ट. तो ये दोनों चीज को अगर कोई बोलना बहुत आसान है ये, ठीक है. बहुत कोई ये बोलता है कि माया को छोड़ दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए. अब देखिएगा उसमें अहंकार पूरा भर्ती है, भर्ती अहंकार है. थोड़ा सा ठेस मार दीजिए उसको तो सब निकल के आ जाएगा. लेकिन वो बोल रहे हैं कि अहंकार, ये सब कुछ तुम्हारे अहंकार की वजह से हो रहा है. तो ये तो रहेगा ही. सभी लिविंग बीइंग चाहता है कि अपना वो अपने आप को मतलब प्रतिष्ठित करे, तो ये सभी कोई चाहेगा, ठीक है. तो अहंकार रहेगा और माया से मुक्त होने का प्रोसेस जो है दैट इज एक्चुअली जो संत लोग उसको डेवलप करते हैं. लेकिन जो स्पिरिचुअल जाइंट्स है, इवन अब मान लीजिए कि रामकृष्ण परमहंस जी, तो रामकृष्ण परमहंस जैसे जो महात्मा है, तो उन्होंने भी बोला है कि मुझे खाने का बहुत लोभ है, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, अगर नहीं खाऊंगा तो मैं जीऊंगा नहीं, बिकॉज वही चीज मुझे बांध के रखा है. Most exponents of modern science today lean towards the materialist view that consciousness is a byproduct of the neurochemical processes occurring in our brain. It depends on these processes and cannot exist without them. On the other hand, the Upanishads uphold an idealist view that consciousness exists by itself and that the physical world depends on it. There is no objective reality that exists independently of the observer. Schrödinger supported this view and lamented the aversion for it. It must be said that to Western thought, this doctrine has little appeal. It is unpalatable, and it is dubbed fantastic, unscientific. Well, so it is, because our science, Greek science, is based on objectivation, whereby it has cut itself off from an adequate understanding of the subject of cognizance of the mind. So the mind-body problem, he wrote, is our fruitless quest for the place where mind acts on matter or vice versa. The material world has only been constructed at the price of taking the self, that is, mind, out of it, removing it. Mind is not part of it, obviously. Therefore, it can neither act on it nor be acted on.